That is, yes, ICCHP, UK कॉलेज ऑफ हिप्नोसिस एंड हिप्नोथेरेपी, ये आपको डिग्री देता है। कहाँ पे मैडम ये? तो यूके। ओके। बाहर आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इंडिया में नहीं है। वजह? क्योंकि साइकोलॉजी का ही इतना वो है अभी पंगा। अब हर देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है, देखो गाइस, मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं आपको अपना बेस्ट नॉलेज देती हूँ और मैं आपको ऑथेंटिक नॉलेज देती हूँ, ताकि कल आप मेरे वर्ड्स अगर किसी के सामने बोलो तो आपको ये ना हो कि यार उस ट्रेनर ने तो मेरी बेइज्जती करा दी झूठ बोल के। इंडिया में मेंटल हेल्थ ही अभी बहुत स्ट्राइव कर रहा है अपनी पोजीशन पाने के लिए। आई डिड माई कोर्स फ्रॉम अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन इन साइकोफार्माकोलॉजी, ठीक है। तो वहां पर मुझे पता चला कि यार सबसे ज्यादा जो हाईली प्रिविलेज्ड वहां पर माना जाता है वो साइकोलॉजिस्ट को माना जाता है, काउंसलर्स को माना जाता है, इवन अबव द कार्डियोलॉजिस्ट। और साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट वहां पर एज अ कोलैबोरेशन काम करते हैं। हर डॉक्टर के साथ एक साइकोलॉजिस्ट उनका कोलैबोरेट है। इंडिया में क्या होता है, डॉक्टर सोचते मैं इसको उस डॉक्टर के पास भेजूंगा, मेरा तो मरीज खत्म, सही जगह पर पहुंचाते ही नहीं है ना मैडम? मैडम मेरा एक फ्रेंड था, वो डिप्रेशन का पेशेंट था। तो उसको 1.5 साल तक एक साइकेट्रिस्ट बस 400 रुपए की पुड़िया गोली की देता था और उसको बेवकूफ बनाता रहता था। तो वो मेरे संपर्क में आया उस दौरान, उसने मेरे को अपनी प्रॉब्लम बताई अकेले में। तो उसके बाद मैंने उसको कहा कि एक काम किया कर, तू कुछ मत कर, एकांत में 10 मिनट डेली बैठना शुरू कर दे तू। और उसके बाद एक रवि कुमार पांडे थे इंदौर में, वो हिप्नोटिज्म सिखाते थे, उनका न्यूज पेपर में ऐड आया था। तो वहां जाके वो 7 दिन में सही हो गया। थेरेपी काम करती है, साइंटिफिक मेथड है, आप कितना भी कुछ भी कर लो, पर जब तक कि आपको साइकोलॉजी का बैकग्राउंड या साइकोलॉजी के टिप्स नहीं पता होंगे तब तक कि आप कैसे अप्लाई करोगे एक पेशेंट के लिए। बेसिकली हिप्नोथेरेपी हम अप्लाई करते हैं, पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, वो अप्लाई करेंगे, सब चीज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मेन मुद्दा ही ये है कि कितने लोग जो हिप्नोथेरेपी करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनके पास खुद के पास कितनी नॉलेज है, राइट? Sami, is my voice is not audible, guys? Okay, I'm listening. No, ma'am, it is audible. No, ma'am, it is audible. मैम It's बीच में quite clear. हुआ था, एक सेकंड के लिए क्रैक हुआ था। Sami sir, I would request just check your network connection, right? Okay. So, जैसे कि हमें राजेश सर ने बताया कि सही तरीके पर बताया नहीं। Samir sir, I would request you unmute yourself and then speak. Yeah, okay, ma'am. I'll check my connection. Yes. Yeah, okay. Thank you. Yeah. So वो ठीक हो गया बिना दवाई के, ऐसा ही होता है। अब ये बात थेरेपिस्ट के ऊपर भी होती है, हर थेरेपिस्ट एक जैसा नहीं होता है। मैं 500 से 600 मरीज आज की डेट में मैं देखकर बैठी हुई हूँ, तो डेफिनेटली मैंने 500 से 600 जिंदगियां जी चुकी हूँ मैं इसी जन्म में। मान सकते हो आप लोग? 50 लाख इमोशंस में देख चुकी होंगी लोगों के, है ना? और 5000 लाइफ के लेसन्स भी सीख चुकी होंगी मैं। तो कंसिस्टेंसी इज द की। कोई भी थेरेपी, कुछ भी पढ़ रहे हो, उसके बेसिक को क्लियर कर लो, then no one can stop you, right? रही बात हिप्नोथेरेपी की, तो बहुत सारे लोग हिप्नोथेरेपी को तंत्र मंत्र से भी जोड़ रहे हैं। भूत भगा देंगे हम आपके, देखो ये काला साया दिख रहा होगा तुम्हें, देखो तुम उस जगह जाओ, उसको पकड़ के लाओ, मैं आ गया हूं बराबर में। अरे मेरे साथ खुद हुआ ये, पता है? इसकी स्टोरी बताऊंगी कि मैंने क्यों हिप्नोथेरेपी पर रिसर्च करी। सनक है मुझे, अगर कोई मुझे एक बार बेवकूफ बना दिया तो मैंने बोला अब तो मैं पढ़कर ही रखूंगी इसको, छोड़ूंगी नहीं।
हमारे पास एक मिले हिप्नोथेरेपिस्ट थे, हमें तब पता भी नहीं था वो हिप्नोथेरेपी क्या होती है। ये टॉपिक से रिलेटेड है और ये चीज आगे बढ़ने से पहले आपको पता होनी चाहिए। बोला कि ठीक है, अब भाई ऑब्जर्वेशन स्किल्स होते हैं, मैं सिग्नेचर एनालिस्ट हूँ, कोई साइन करता है मैं खोलकर उसकी पर्सनालिटी समझ जाती हूँ किस तरीके का इंसान है। तो वो मेरे पास अपनी वाइफ को लेकर आए थे बेसिकली, अब उनको पैनिक अटैक का इशू था। तो 2-4 बार आए, उन्होंने देखा मुझे, मेरा पैटर्न देखा, मेरी बॉडी लैंग्वेज को देखा और जिस तरह से मैं काम करती हूँ सब चीजें। तो उन्होंने मुझसे एक दिन बोला कि यू आर हैविंग दिस इशू। मैंने कहा हाउ कम यू नो, आई हैव नेवर डिस्कस्ड इट विद यू। बात ये होती है कि एक इंसान आपको जब 4-5 बार 1-1 घंटा बैठकर ऑब्जर्व करेगा तो सब कुछ ही पता चल जाएगा उसके बारे में, राइट? तो उसने बोला आप एक हिप्नोथेरेपी का सेशन ले लो, ट्रांस में जाओ। मैंने कहा क्या फायदा होगा उससे? नहीं, आपको जरूरत है, आपके ऊपर बड़े बुरी नजर लगी हुई है, आपके ये है वो है। मैंने कहा कि चलो ठीक है, तब भी आई वाज लाइक ओके, मैं बड़ा लाइटली ले रही थी। सेशन दिया उन्होंने मुझे, पहले तो मैं जा ही नहीं पा रही थी ट्रांस में, इतनी तो ढीठ बन चुकी हूँ मैं साइकोलॉजी पढ़ पढ़ के कि मुझे कोई भी मेरे सबकॉन्शियस में लेकर नहीं जा पाता। पर मैंने बोला कि सदफ बी ओपन, चलो चलते अपने सबकॉन्शियस में घूम कर आते। सबकॉन्शियस में लेकर गए, वो हमें दिखा रहे हैं अब तुम अपने घर पर हो और यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, तुम्हें काले साए नजर आ रहे होंगे। मतलब माइंड जो होता है ना, वो उन्होंने सोचा, उन्होंने लिटरली मुझे बोल दिया कि तुम्हारे पूरे घर के ऊपर जादू टोने हुए हुए, तुम्हारे ऊपर 50-60 आत्माएं चढ़ी हुई हैं, ठीक है, और एक एक आत्मा का हटाने का मैं 5,000 रुपए लूंगा, ठीक है, और तुमको हेल्थ का जो इशू रहता है उसकी वजह यही है क्योंकि वो आत्माएं चाहती नहीं है कि तुम आगे बढ़ो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बीमार तो मैं बचपन से रही हूँ, नजर बहुत लगती थी। हाँ, आपको नजर बहुत लगती होगी। तो मैंने कहा क्या करूं, चप्पल से उतारूं या फिर मिर्चों से उतारूं या कपड़ों से उतारूं या झाड़ झाड़ फूक कर आऊं? ये सब चीजें काम नहीं करेंगी, हिप्नोथेरेपी से सारी आत्माएं भाग जाएंगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो। दूसरा सेशन हुआ, आत्माओं के हाथ पकड़वा पकड़वा कर वो हमें लेकर जा रहे हैं, इसका हाथ पकड़ो, इसको धक्का दो, इसको भी धक्का दो, उसको भी धक्का दो। हमने भी चलो कर लिया कर लिया कर लिया। अब थोड़े टाइम तक इंसान जब 1-1 1.5 घंटा आराम से सुकून से लेटा रहेगा तो उसको सुकून नहीं आएगा क्या? आएगा। उन्होंने बोल दिया कि आपकी आत्माएं जो हैं आपको ऐसा कर देंगी, घर से ये नेगेटिविटी निकालो, घर से वो नेगेटिविटी निकालो। एक तो ये नेगेटिविटी का समझ में नहीं आता यार। स्पिरिचुअलिटी इज अ डिफरेंट थिंग एंड साइकोलॉजी इज अ डिफरेंट थिंग। अगर आप इन दोनों चीजों को जोड़ लोगे तो एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बनेगा। लेकिन ये लोग स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी को जोड़ के तंत्र मंत्र का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जो कि गलत है। अब 5,000 रुपए एक स्पिरिट को निकालने के, बताना जरा। आज मेरे पास 50, आज भी मेरे ऊपर वो 50 आत्माएं हैं। काम तो मैं कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। और रही बात मेरे हेल्थ की, तो मैं बिना छुट्टी के काम कर रही हूँ 6 साल से। पहले राष्ट्रपति भवन में छुट्टी नहीं मिलती थी, 26 अगस्त को भी सुबह, 26 जनवरी को भी सुबह सुबह परेड देखने पहुंचो, फिर काम पर लग जाओ। और अब भी पर्सनल सेटअप स्टार्ट करा है, तो अब भी मैं आज भी काम कर रही हूँ। इसके बाद मेरे सेशन से बैक टू बैक, टाइम ही नहीं है। खाना मैं जानबूझ के स्किप कर देती हूँ काम की वजह से, इस वजह से मेरी हेल्थ नहीं हो पा रही है। सो मैंने जब अपनी साइकोलॉजिकल नॉलेज अप्लाई करी तो मुझे पता चला कि बेवकूफ बन चुकी हो तुम, ठीक है, और एक्सेप्ट कर लो, तुमको बेवकूफ बना दिया और तुम बन चुकी हो। एंड आई एम ओके विद दैट। एटलीस्ट आई एम हैविंग द करेज कि मुझे किसी ने बेवकूफ बनाया। तब से मैंने सोच लिया था कि मैं किसी और को बेवकूफ नहीं बनने दूंगी। ठीक है, मैं त्रिशूल लेकर आ गया हूँ, मैं उस आत्मा को मार रहा हूं, देखो। अरे भाई क्या बकवास कर रहे हो तुम यार। ये सीन हमारे साथ हो चुका था। बहरहाल पैसे तो हमने दिए नहीं, लेकिन उनकी वाइफ का इलाज हमने फ्री में करा था। ये है हमारी स्टोरी हिप्नोथेरेपी को पढ़ने की। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं थोड़ा सा हिप्नोथेरेपी के बारे में। सबसे पहले अब हिप्नोथेरेपी होती क्या है, जल्दी से बताओ। Ma'am, when your mind is transported to a different world, और आप अपने subconscious में जाके चीजों को समझ पाए,
ठीक है, करेक्ट अप टू सम एक्सटेंट। और बताओ। आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आता वो जो पेंडुलम करके करना, लाइक Actually, हिप्नोटाइज करके जो बैक ऑफ द माइंड है हमारे, हाँ या अनकॉन्शियस चीजें हैं, उन चीजों को निकालना समवट। ठीक है, ओके। यस समीर सर। एक yes. So I always had some inhibitions towards hypnotherapy because I've always thought that it's not a science and it is like, the pendulum and all hypnosis. I never, believed that. So I never tried to study this formally. Yeah. ठीक है, someone else was also speaking something. trying to focus at one thing and cutting off all the other things that is surrounding your environment. Okay. So this is clear that you all are curious about hypnotherapy और somewhat आपके दिमाग में है कि यार hypnotherapy कैसे overcome करती है चीजों से, कैसे help करती है चीजों से overcome करने में, right? करती तो है लेकिन मुझे पता नहीं है कितना करती है कितना नहीं करती है, ठीक है। अब एक चीज और होती है स्टेज हिप्नोसिस। कभी आपने स्टेज पर देखा है वो कैसे जादू दिखा देते हैं हमें? वो स्टेज हिप्नोसिस होता है। हिटलर भी करता था मैडम हिप्नोटाइज। हिटलर? सर इतनी जी। पुरानी नहीं हूं मैं, इतनी पुरानी नहीं हूं मैं सर। हाँ नहीं है नहीं, लेकिन मैंने उनकी आचार्य रजनीश की एक किताब पढ़ी थी तंत्र सूत्र, उसमें उल्लेख था इसका। अच्छा, एडवर्टाइजिंग कंपनियां भी हिप्नोटाइज करती हैं। सर वो हिप्नोटाइज नहीं करती हैं, वो साइकोलॉजी प्ले करती हैं आपके माइंड के साथ। 50 दिन तक मैं आपको बोलूं राजेश सर आप ये हो आप ये हो आप ये हो आप ये हो, 51वें दिन आपका मन मानने को राजी हो जाएगा। तो वही तो हिटलर करता था मैडम जर्मनी में। हाँ जी, वही जर्मनी में हिटलर करता था, झूठ को बार बार दोहराना। तो यही तो बात होती है, जो जनता होती है वो पहली पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को ही रिलायबल समझती है। दैट इज वंस अगेन अ साइकोलॉजिकल टर्म नोन एज एंकर बायस। द वेरी फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कंसीडर्ड एज ऑथेंटिक। इसीलिए जो टीवी पर बार 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 दिखाया जाता है वही हमारे दिमागों में भरा जाता है। अनकॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में। एक्चुअली एवरी सिंगल पर्सन इज प्लेइंग दैट ट्रिक। एड्स रन होते बार बार होते, अगर सदफ सईद अपने एड्स रन करवाएगी बार 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 बार, चलो यार इससे एक बार मिल ही लेते हैं, है ना। कोई भी प्रोडक्ट है बार बार एड्स रन हो रहे हैं उसके, मेरी आंखों के सामने आ रहा है यार 1 पर 2 फ्री है, एक बार छोड़ दिया, 2 बार छोड़ दिया, 3 बार छोड़ दिया, चौथी बार कर ही लेगा इंसान। सो दिस इज समथिंग कि मेरे माइंड के साथ प्ले करना, ये हिप्नोथेरेपी नहीं है, ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं और टैक्टिक्स हैं। मैम धर्मगुरु भी करते हैं ये काम तो। क्या? यही जो एडवर्टाइजिंग कंपनियां करती है वही काम धर्मगुरु भी करते हैं। यस, तो धर्मगुरु जो है वो एक्चुअली यूटिलाइज तो इसी चीज को कर रहे हैं ना। क्या आप परेशान हैं? आपकी समाधान हमारे पास है। एक कॉल आपकी दुनिया बदल देगा, आपको आपका प्यार वापस मिल जाएगा। क्या कोई आपको छोड़कर जैसे 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 एडवर्टाइजिंग कंपनियां एक कट्टर कस्टमर बनाती है, ऐसे धर्मगुरु एक कट्टर इंसान बना देता है आदमी को। सर दुनिया तो इसी पर चल रही है ना, हर कोई हर किसी को बेवकूफ बनाने में लगा पड़ा है। जितना बटोर सकते हो बटोर लो, बाकी का कुछ करो। So, hypnotherapy is actually the use of hypnosis in the therapeutic context. Hypnotherapy एक साइंटिफिक मेथड है जिसको रिकॉग्निशन अब मिला है। ये जितनी भी बकवासें होती हैं कि आपको पेंडुलम दिखा के हम हिप्नोटाइज कर देंगे और आपसे जो मन चाहे करा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो वशीकरण दूसरी चीज है, मैं वशीकरण को भी नहीं नकारती हूँ, वशीकरण दूसरी चीज है, वो एक अलग तरीके की आर्ट है। जैसे कि गुड स्किल्स होते हैं वैसे भी बैड स्किल्स होते हैं। जैसे कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं दुनिया को हील करने के लिए काम करती हूँ, वैसे ही जेब कतरे भी घूमते हैं जो बड़े माहिर होते हैं, जेब काट के ले जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो गुड एंड बैड बोथ आर रिसाइडिंग इन दिस वर्ल्ड ओनली एंड दैट्स व्हाट मेकिंग इट बैलेंस्ड। जिस दिन सारे अच्छे अच्छे रह जाएंगे तो भी दुनिया खत्म हो जाएगी, और जिस दिन सारे बुरे बुरे रह जाएंगे तो भी दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक है,
Coming back to hypnotherapy, hypnotherapy is a scientific method that uses the hypnosis in the therapeutic context. Therapeutic context कि हम therapy लगाकर hypnosis में लेकर जाते हैं इंसान को और फिर उसके जो ट्रॉमास होते हैं उससे हील कराने की कोशिश करते हैं. लेकिन मार्क माय वर्ड्स, कोई आत्मा कोई प्रेत कुछ नहीं होता हिप्नोथेरेपी के थ्रू. बेवकूफ मत बनना. नाउ सम ऑफ द फैक्ट्स अबाउट हिप्नोथेरेपी. एक तो यार जो हिप्नोथेरेपी करेगा कोई उसके पास स्विंगिंग पॉकेट वॉचेस नहीं होंगे. मेरे हाथ में दिख रहे हैं. मेरी किसी भी तरह से बात करने की तरह से लग रहा है आपको कि मैं आपको बड़ी स्पिरिचुअल और ये और वो चीजें करने वाली या हिप्नोथेरेपी की मास्टर हूं तो मेरा ये अटायर होना चाहिए. नहीं, बैठी हूँ यार, संडे का दिन है, सुबह है, क्लास लेनी है, चलो. विदाउट स्विंगिंग वॉचेस. कोई पॉकेट वॉचेस नहीं रखता, कोई स्विंगिंग वॉचेस नहीं रखता है. और you do not go unconscious or into an oblivious state where anything could be said or done to you. मुझे याद है CID का एक एपिसोड आया था, कुछ तो गड़बड़ है दया. उस दिन मुझे लगा कि वाकई में कुछ तो गड़बड़ है दया. CID के एपिसोड में दिखाया उसने उसको हिप्नोटाइज कर लिया और वो उसको हिप्नोटाइज कर रहा है. वो जाकर छत पर जा रही है, वो हिप्नोथेरेपी में चलती जा रही है, चढ़ चढ़ के वो नीचे कूद रही है और पीछे से भाग रहे दया साहब. Okay. So I remember that there is a serial called CID, which everyone must be aware of, right? Okay, Sangvi ma'am. So I saw that when I was when I was about 11 years old. Yeah, I remember. I saw that episode of that CID. Then what happened is they portray that a person has done the applied the hypnotherapy, has hypnotized the person, and that person is forcing to kill the people, right? That person is now, after killing the people, that person has directed that girl to go to the terrace and then kill yourself by committing suicide, and that girl was doing that. So it is completely utter shit. You never go unconscious whenever you are being applied hypnotherapy. We all are into our conscious. We can stop it at any time, right? We all remain conscious. We all are just going deep down into our subconscious. But we know that if I am starting my hypnotherapy session here, and now I'm applying the self-hypnosis, then I am seeing that yes, fan is moving. Yes, someone is there in my room. Yeah, probably my sister is there. So I'm able to hear things. I'm able to sense that someone is there. Okay, so I am not completely unconscious, but yes, I am into my resting position. Next is you remain completely in control and aware of what is happening at all the times, right? As I told you right now, that I know if I am going into my trance, still I'll be able to hear the fan voice, or I'll be able to sense that yes, I have switched on the AC. Okay? You may know someone who has had hypnotherapy and said that I didn't go under and I could hear everything that was being said. So at times people will say that yeah, I was तो not in trance, मैं तो गया ही नहीं था trance में, मुझे तो सब कुछ सुनाई दे रहा था. But no, that is possible. You can explore your subconscious while remaining conscious. What is subconscious? Subconscious is something where our unhealed traumas, our fears, our phobias are lying, right? So there is no under as such. Hearing everything that is being said is exactly how it should be when you are in hypnotic state and undergoing hypnotherapy. Whatever Sadaf Saeed is saying, you are able to hear and making sense to you. It is a completely, not I will say that completely conscious, because our eyes are closed, okay? But you are not completely in an unconscious state. So these are some of the facts about hypnotherapy. Any question is there, so you can ask. Ma'am, just one question. Is there any difference between subconscious and unconscious mind? I will be telling you in the upcoming slide. I will be telling you in detail, okay?
So now, after understanding कि यार ये ऐसा तो होता ही नहीं है, so what exactly is the hypnotic state? Anyone would like to answer this? What exactly is the hypnotic state? Ma'am, when Clear. mind start, taking the suggestions. Yes. A relaxed state. Okay. Correct. Some more thing. You are partially conscious, but you are trying to partially go tap into your subconscious. We are completely conscious actually, not partially. Okay. चलो कोई बात नहीं. हेलो. Yes sir. डीप ब्रीथ ऑल्सो मैम. Okay, ठीक है. A hypnotic state is simply an altered state of consciousness, right? Right now, if I am having a panic attack, I will be applying that. I'll try to go into my subconscious thing. How? I'll close my eyes and I'll try to apply the self hypnosis. Hypnosis सीखने का सबसे simple तरीका है अपने ऊपर apply करो. Try it on your own self. ध्यान लगाओ, अपनी बॉडी के ऊपर रिलैक्स करो, जस्ट रिलैक्स and keep it like this. Sit in that position and try to understand what is going inside my head. If you sit like that for 5 minutes, after 5 minutes you'll enter into your hypnotic state, self hypnosis, and then you'll feel relaxed, and then you'll get to know the answers, that why are you feeling like this, how I can overcome this. Okay? So basically hypnotic state is simply an altered state of consciousness. When I'll be sitting like this for 5 minutes, then definitely I will be aware if someone is opening the door of my room, right? So I can stop that hypnosis anytime if I want to. Okay? And it's a completely natural state and can be achieved by anyone. When we are awake and active, our brain wave frequency wave is at beta. That is the awake and the active state. Now, right now, our brain wave is at beta level. That is awake and active. Now, slowly, I am trying to close my eyes and I'm trying to do the deep breathe in and breathe out, and I'm losing by my body. Just relax, relax, relax. On the count of 10, relax. I am just doing my breathing normally. Now, the moment I started feeling that I am getting the relaxing, now my brain frequency will shift to the alpha level. ठीक है? Most of the time, हम नींद में जाने से पहले का situation देखा है? When we are about to sleep, और उससे पहले जो position होती है, ठीक है? That is theta. Theta level पर we try to conquer the subconscious. समझ में आया? And when we are completely unconscious, when we enter into the realms of dreaming before falling into a deep restorative sleep, then when we are sleeping, our brain wave is at delta. So basically, right now we are at beta, and when I'm trying to relax myself and applying that no, I have to relax myself, and that is the alpha state. Coming back to the next point, that yes, now I want to do the self hypnosis. I have to apply that relaxation position, that I have to relax, just relax, just relax. Take a deep breathe in, hold on for 3 seconds, and then breathe out. Once again, breathe in, hold on for 3 seconds, and then breathe out. Whatever you do to make your all the organs relax. Okay? Once you reach the alpha level, then you start thinking about the thoughts or the conflicts or the problems that are hampering your peace of mind, right? That is the time that I am little bit cut off with the reality, but not completely. So at that particular moment,
Our brain wave is at theta, and we most of the time it is very much difficult for a patient or for a client to reach to the theta level at a very first session. Many patients took 2 or 3 sessions to just reach to this theta. Why? Because they are quite anxious. And why we are applying the hypnotherapy? We are applying the hypnotherapy. Hypnotherapy is very much good and, a very much effective tool for people who are having severe anxiety. It will help them relax. But keep that in mind that hypnotherapy is not only the choice of treatment. You cannot treat disorders with hypnotherapy completely. You can apply. सर अल्फा डेल्टा थीटा बीटा ये लेवल्स के नाम हैं. इसको मैं हिंदी में कैसे बताऊं? हिंदी में क्या बोलते हैं? Can anyone guys help me? हिंदी में अल्फा बीटा थीटा को क्या बोलते हैं? सेम ही बोलते हैं. हाँ, तो ये नाम होते हैं सर, ये हमारे ब्रेन फ्रीक्वेंसी के नाम है. Just one question. Yes. So we are these levels beta, alpha, theta, and delta are like going to the unconscious mind. Okay. So in spirituality, you raise the level of your consciousness to reach to the level. So is it so, or it is always like beta, alpha, theta, and delta? So spirituality works with the mostly on the meditation part, whereas Yes. being a clinical psychologist or you can say a therapist with an experience of 6 years, what I have found is that people who are having anxiety, who are in depression, cannot meditate. That's the main point. आप उनको साउंड मेडिटेशन के नाम पर इतना पैसा ले रहे हो. आप ये तो देखो, that person is in depression. How can that person be go into the meditation, right? अब एक छोटी सी बात है. अभी I am going through a rough patch in my life. Someone is saying, go to temple. It's really hard for people who are striving through mental health to pray. होता है ना? Right. Why? They cannot concentrate on anything. Exactly. Then how can they work on meditation? How I am working on my patient is that, okay, fine, you're going through something. Let's just find out the reason. What is the root cause of the problem of your anxiety? Then I applied the progressive muscular relaxation therapy. I try to make them relax by using some of the hypnotherapy techniques. Once my patient is relaxed, I'll make them sit once again in front of me, and then they're better in communication. Problem is, being a therapist or being a counselor, never say that stop doing this, start doing this, do that. No, this is wrong. A patient is actually going through a rough phase in their life. अगर मेरे सर में दर्द और अभी कोई मुझसे आकर बोले सदफ you have to take the next session as well, what would be my reaction? Tell me. I will not be able to do it to the best of my ability. Yeah, and if I will be pressurized to do that, then what would be the consequence of that? I'll be taking the next session. What would be the consequence? It will not be as effective. Yes, and also it will affect my health, isn't it? So consider psychological conflicts or psychological disorders like this. Previously, a person starts to say, no, that this is something which I am not comfortable with. But the other person is not taking that into consideration. The same thing is happening again and again. Then we fall into that pit of mental health conflict. And when we have fallen into that pit of mental health conflict, then definitely
my mind or the mind of my patient will not be in a position that मैं उसको ज्ञान दूं कि आपका साउंड मेडिटेशन करके मैं आपको हील कर दूंगी. बॉस, नहीं होती ये चीजें. जड़ से खत्म करना पड़ेगा. यू नीड टू इरेडिकेट द प्रॉब्लम फ्रॉम द रूट्स. ठीक है, साउंड मेडिटेशन करके उसको अच्छा लगेगा, थोड़ी देर के लिए सो जाएगा, फिर रात में उसको नींद नहीं आएगी. These things are effective. I'm not saying these things are not effective, but these things should be used along the side of your sessions. Then your therapy sessions, like cherry on the cake, they will work like that. But people are saying that your things will be worked out after just taking this sound meditation or this or that or ye or wo, reiki healing, aura cleaning. आप ऑरा क्लीन तो कर दोगे, मन को कहां से निकालोगे? हाउ विल यू टेक दैट थिंग आउट ऑफ दैट पर्सन्स माइंड एंड सोल? Well, actually things are residing in the mind and the soul, right? If something has hurted me, so that is inside of me, right? How I have to deal with that? By just taking that out and just understanding that yes, this is what that has hurted me. Are you guys getting me? So कभी भी ये ज्ञान मत देना अपने साइकोलॉजिकल पेशेंट्स को जिनको पता चल रहा है आपको that yes, they are going through some sort of depression or anxiety. Then don't tell them to meditate. क्योंकि मुझे पता है जब मैं टेंशन में होती हूँ, I hardly can offer नमाज, क्योंकि उस वक्त मैं सबसे ज्यादा वीक होती हूँ. And negativity hits us really hard when we are at the weakest. Okay? Yes, Purnima, Parinita ma'am. Yeah, ma'am. Just how you used sentence like the mind and soul. Okay. So, how far this word soul is capable or like that importance in hypnotherapy? Like, do you consider soul also as a part of healing? I mean, by using this. See, ma'am, so the question is how much importance is the word soul is having in hypnotherapy, right? Right, ma'am? Yes. Yes. Okay. Yes, ma'am. So when I am using the word soul, that means my inner self. Self has two parts. First is real self, second is inner self. Real self is something that I'm showing to you right now. Okay, I am the therapist and I'm doing my work. Now what I actually want is something that might be possible that can be hidden from you. Okay, and between these two comes the self-actualization. Self-actualization is basically when the person is having much when your inner self and the real self is at the same pace, then you achieve the self-actualization. Okay, so when I'm using the soul, that means your inner self. And most of the conflicts are coming when we are forced to do something. I gave you the example that I have developed headache, and so I got the call that you have to take the another session as well, even though I say no, but they force me and I have to take that. And the consequences that affected my health as well as my mood as well as the quality of the session I used to provide. Correct? Yes, ma'am. I hope you the answer of your question is clear. Yes, but very difficult. And for my question is not so. And your voice is breaking. Parinita ma'am, your voice is breaking. Okay, you can type it, ma'am. You can type it, right? So राजेश सर ने एक क्वेश्चन पुट अप करा है कि आप हमें इसकी डेफिनेशन समझा दीजिए कि ये सारी चीजें क्या होती हैं. मैम, हाँ जी.
Yes, I would like to cut the conversation. I want to ask something. Like, as you have said, if a person or client is going through anxiety or depression, it's not easy to make him to that stage of hypnotherapy and meditation like that, right? So can we apply CBT, and after that, by getting the reason or the root, we can go process for the... Listen, I said when a person is anxious, don't tell them do the meditation. Start applying your tactics. What are those tactics? Hypnotherapy could be one of them. Just relax, close your eyes, rest your head, and take a deep breath in, hold, and then breathe out. Do make your client do this, okay, before talking. ठीक है? And then जब ये हो जाता है तो थोड़ा उसकी एंजाइटी रिलीज हो जाएगी. This is one of the techniques. ठीक है? Before talking. Second thing, mandala, art therapy. If your client is quite anxious, आपको दिख रहा है कुछ नहीं सुनेगा, उसको दे दो, ड्रॉ करो. The person will start releasing the anxiety. This is art therapy. So बहुत सारे तरीके हैं एंजाइटी को, पेशेंट को काम डाउन करने के लिए, सेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए. But once again, a therapist has to be that much, good, efficient. Yeah. Parinita ma'am, your hand has not been raised. Hello, ma'am. Sir, Rajesh sir, 1 second. Let me just complete with Mahmooda ma'am. So, Okay. Ma'am, so what I'm saying is the therapist should have the knowledge of every single thing that's going on. Keep yourself updated. What Reiki healers are doing, what kind of spirituality they are talking about, what kind of aura cleaning they are doing. How is it possible? Question them. Just try to find out. काम करती होंगी ये चीजें, लेकिन जड़ तक नहीं जाती हैं. ठीक है? So before starting or applying any psychotherapy, try to relax your patient if he or she is quite anxious by applying the art therapy, or by just giving him some time to just take a deep breath in, hold on for 3 seconds, and then breathe out. Once again, we'll do this. Hold, 1, 2, 3, breathe out. Once again, do this. Hold, 1, 2, 3, breathe out. आप अपने ऊपर करके देख लो. You guys will start feeling better after this. ठीक है? I hope you get the answer to your question, ma'am. Yeah. Okay. Hanji Rajesh sir. Ma'am, told me I want to say about meditation, especially man and woman both are different personality. Hanji. And especially जो women होती है मैम, मेडिटेशन जब वो लगाती हैं तो वो दोनों जो अपनी भौं होती है आईब्रो उनके बीच में लगाती हैं, जबकि लेडीज का जो होता है वो हार्ट सेंटर डेवलप होता है, आज्ञा चक्र उसका डेवलप नहीं होता है लेडीज का कभी भी. ये कहाँ से सीखा आपने? ये मैडम है, पतंजलि में है, ये इसका उल्लेख है. सर गूगल ओपन करके अगर सवाल पूछ रहे हो तो गूगल बंद कर दो, क्योंकि जब भी आप नहीं, नॉट गूगल मैम, दिस इज आई स्टडी बुक. सर अगर आप मुझसे बात करोगे फीमेल, if female is applying the meditation, so whenever I'm closing my heart, I never put my focus on the third eye. No. Okay. Yeah. I never put the focus on the third eye. I always try to make myself relax. Meditation means relaxation. लोगों ने उल्टे सीधे नाम दे दिए हैं, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं. But my point is to make you all clear. अलग अलग चीजें आएंगी, but आपके पास साइंटिफिक प्रूफ भी तो होना चाहिए ना किसी चीज का. Okay. So guys, coming back to the slide, as I mentioned about beta, alpha, delta, theta, and gamma. So guys, beta level per, now we are awake and we are talking. So our brain frequency, as you can see, is like this. We are awake, right? When we apply some sort of relaxation techniques on ourselves, right? Take a deep breath in and breathe out. So our brain frequency
comes to the alpha level, that is this. थोड़ी सी गिरे खुल जाती हैं. And then when we have reached to the level where we are comfortable and we are like, okay, fine, I'm feeling relaxed. So brain frequency turns down into this. Okay, this is the point where we are going into our subconscious. And then comes the theta. नींद में चली गई, मैं सो गई. And gamma is the heightened perception. 3 से 4 बजे की नींद जो होती है वो गामा होता है, इसीलिए बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट है. नाउ कमिंग बैक, आपसे अ क्वेश्चन टू एवरीवन, लोगों ने कभी सेल्फ हिप्नोसिस महसूस करा है जिंदगी में? Sometimes while listening to music or something like that. How you feel that? Very relaxed. Okay. And transported to a different world. And what is that word? Very good, yeah. Probably theta frequency. Who is the one who is speaking? Rubina. Carry on. ठीक है फिर. So I guess that would be ठीक है, चलो. Before understanding the self hypnosis, now Sameer sir asked the question, ma'am, can you please make me understand the conscious and subconscious, right? So just a sec. The difference between the conscious mind and the subconscious mind. Now guys, you are seeing the photo. Are you all able to see the photo? Yes, ma'am. That is the tip of the iceberg, is the conscious mind. ठीक है? Conscious is this much. So the conscious mind makes up the 10%, or we can say the short-term memory, right? Today we met a trainer, Sadaf Saeed. This is in your conscious mind. अब वो subconscious में उनके रहेगा जिनको जो मेरे साथ connect कर पाए होंगे. ठीक है? They'll remember me. So conscious mind is something that is constituting the things that are going around me. ठीक है? Fan is moving, light is there, my laptop is working, my laptop is fully charged, I have to take further more sessions, right? The plans of my day, that is the iceberg, that is the conscious mind, that is the tip of the iceberg. Okay, what is happening in my present? So that is conscious. I am completely in the awake state. Now, can you see the next picture? Yes. What are you seeing? The iceberg is below water, and that is subconscious mind. Yes. Titanic क्यों डूबा था? वो नहीं पता. Iceberg से टकरा के. Because of iceberg. हाँ, तो क्यों आइसबर्ग से कैसे टकरा गया वो? दिख नहीं रहा था वो
बहुत iceberg. डीप डाउन था ना वो, तो दिखता नहीं, अरे उसका लेवल देखो, नीचे, वाटर के लेवल के नीचे था। मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, मैं आपको टॉपिक से रिलेटेड बात समझाना चाह रही हूँ। ये जहाज कभी नहीं डूब सकता है, ये छोटा सा आइसबर्ग क्या करेगा, समझ में आया? जो टाइटैनिक जहाज का जो कैप्टन था, उसने बोला था ये जहाज कभी नहीं डूब सकता है, ये छोटा सा आइसबर्ग है, इसको तो क्रॉस कर जाएगा। पर डीप डाउन आइसबर्ग नीचे बहुत जबरदस्त था। सो कंसीडर योर पर्सनालिटी एज दैट आइसबर्ग। अंडरस्टूड? कि वो छोटा सा आइसबर्ग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, बट डीप डाउन अंदर अंदर मेरी चीजें रिस्टोर हो रही हैं। ठीक है? So your subconscious constitute about 90% of your involuntarily bodily functions, that is breathing, heartbeat, blinking, twitching. Your beliefs are there, your emotions, your feelings are residing there, your developmental abilities are there, behavioral patterns are there, how much you're connected with the spirituality resides in that, your long-term memory is in that. Suppose I did my primer in psychopharmacology from American Psychological Association. Okay, I did my signature analysis in 2018. Okay, I did my career counseling course in 2017. So this is somewhat resides inside of my subconscious. The last phone number, previously we used to live in that area, now we have shifted to this. Previously my dad was working in that company, now he has switched his job. So these all are things are residing in our subconscious mind. Okay, your intuition, the gut feeling. And ladies specifically, never question your gut, please. Never. If your gut is saying something, believe it, that yes it is. Because we are humans and we are much more powerful creature. Has anyone seen Lucy movie? Which movie? Lucy. Yes, yes. क्या है उसमें? यार कैमरा तो ओपन करो, किसी की शक्ल नहीं नजर आ रही मुझे। How she has reached the most subconscious level of her mind. 100% usage of brain. Yeah. That's the power. If we become 100% aware of the power of our brain, the conscious, the subconscious, and we are one of the most dangerous creatures on this planet. We are hardly using 10% of our brain. Einstein used it more. So देखो उसकी theory. So the power is, कहने का मकसद और बताने का मकसद सिर्फ इतना है गाइस कि ये सारी थेरेपीज, ये सब कुछ किस तरह काम करती है, because there is some self healing capacity within our own self. I am having the control. No matter what, I cannot control the situation. Once again, a huge fan of Steve Harvey. So he once again said that when you can't control the situation or what's happening around you, change your reaction towards that situation. And that's where your real power is. And when I started doing that, I felt really good that yes, situation, I am unable to control the situation, but I can control myself. If someone is trying to provoke me, I don't have to get instigate. Many a times, too many, people are just using filthy language for me in front of my face. But at that particular moment, I'm connected with my subconscious and I'm reminding myself, na Jani, Sadaf, no, you don't have to. Just keep quiet. Just keep quiet. Because I don't want to get into that argument, because that's what the other person wants me to do that. So ये power of consciousness and power of subconscious है, ये gain करने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा. मेरी gut feeling है something is not good. Vibes, I connect to the people's vibe. Why? Because I have worked on myself.
The main project of your life is your personality as a psychologist. And trust me, guys, I was about to do the PhD in psychology, but I left it. I am scared of myself. And when I'm saying this, I really mean it. Because I cannot control everything. So people are getting fascinated. Ma'am, how you just do this, how you do that, how you do this. But deep down, there are some of the ways where I feel like that this knowledge is harmful for me as well. Because it is good for others. But for me, I am able to identify them. I am able to know the feelings of others. And even in this situation, if I'm attached to someone and that person is not being attached to me, so without having any argument, I will be in conflict, no? That's why I'm saying that this particular knowledge is dangerous for me. I never wanted to give up on studies. I love to study. But because of this thing, in order to save myself, I stopped it. So that's the power of subconscious. The more you'll get connected to your subconscious, the more things will be easy for you. बिना कहे ये जो अंतर्यामी, fortune teller, this, that, ये सारी चीजें होती है ना, ये सब आपके अंदर है. These all things are residing inside of you. And you guys are having the answer of everything. Just connect with your subconscious and you'll get to know the answer of everything. Yes, Samir sir. Ma'am, two questions I'm having. So people always use subconscious and unconscious terms interchangeably. You know, some people use subconscious, some people use unconscious. Are they different or are they same? They are different completely. Subconscious is somewhat, we are not completely unconscious. Do you remember that after sleeping, can you recall your previous job? No. So how can they be same? No. When we are unconscious means completely I've lost my senses. I'm partial dead. I'm talking about unconscious mind. So Freud's Freudian theory, conscious, preconscious, and unconscious. I'm talking in that context. According to Freud's psychoanalysis, the topographical structure of personality he gave, yes. that is subconscious, unconscious, and conscious. These are the three things. Conscious is something which we all are in right now. Okay. Subconscious is something that we talked about recently. All our feelings, all our emotions, all our fears, phobias, creativity that is residing there, the long-term memory. And unconscious is when we are partial dead, when we are sleeping. मैं बेहोश हो गई, I was unconscious. इसका मतलब क्या है? मैं senses में ही नहीं थी अपने. So according to Freudian topographical structure, once again, the definition is same. So he talks about, yes, he talks about conscious mind, pre-conscious mind, and unconscious mind. He never talks about subconscious. Pre-conscious or subconscious is one and the same thing, sir. One and the same. Okay, that's what my question. Yeah. That was my question. Yeah. Pre-conscious and subconscious. Okay, thank you, ma'am. Another question is like, you know, so where your habits are. In a previous slide, you have mentioned that your habits, your behavior patterns are in your subconscious mind. Yes. So are the habits also in your subconscious mind? Obviously. Okay. Addiction. Okay. Take the example of addiction. That is not in my conscious. That is in my subconscious. मुझे 4 बजे लेना है weed, तो मुझे लेना ही लेना है. नहीं लूंगी तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा. दोस्तों के साथ जा रही हूँ, हैबिट है कि दोस्त लेंगे तो मुझे भी लेना ही लेना है. So habits are also there. Okay. मेरे कॉन्शियस की चीजें शॉर्ट टर्म होती हैं. समीर, कॉन्शियस की चीजें शॉर्ट टर्म होती हैं. जैसे कि मेरा आज का स्केड्यूल, ये शॉर्ट टर्म रहेगा. जैसे जैसे स्केड्यूल पूरा होता जाएगा, क्लाइंट्स देखते जाऊंगी, मेरा स्केड्यूल पूरा हो जाएगा. लेकिन मेरे सबकॉन्शियस की चीजें वो होंगी जो इस पूरे दिन में हुआ. कुछ मेजर चीजें होंगी वो मेरे डीप डाउन सबकॉन्शियस में पहुंच जाएंगे. Okay, and what is there in unconscious? Your unconscious?
So unconscious is I am sleeping, I am not in my senses. और अक्सर ऐसा होता है अनकॉन्शियस में जो हमें ड्रीम्स आते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस को लेकर आते हैं. फ्रॉइड ने ड्रीम एनालिसिस भी बताया, इंटरप्रिटेशन. Dream is a pathway to reach to the unconscious. That's what he said. Yeah. Yeah. It could be. Okay, now think of a computer. A computer has many functions, but in order to function, it needs a hard drive, right? So your brain is that hard drive. Your body is the computer and your brain is the hard drive, right? Sometimes viruses get in and install rogue applications in the computer, right? So we need to understand in order for the computer to function effectively, again, the rogue applications needs to be uninstalled. So your subconscious mind is your hard drive and it knows and runs all your programs. Everything we have ever thought, imagined, believed, heard, learned, seen is stored in our subconscious. Things that have been experienced negatively can be linked to the rogue applications. For example, I had a fight with someone and that had a negative impact on me. That is stored in my subconscious, right? So when that fight is having the impact on my personality, if I'm very much affected with that, then definitely I will be getting irritation, restlessness. I'll be losing sleep. If I'm having a fight with a person that I am in a relationship, or my husband or my brother or my sister, whatever, so that thing can just, had a negative impact on my personality. So that will be considered as a rogue application, as a virus. Okay? So in order to remove that virus, we will be applying the hypnotherapy as one of the implications, not the holistic treatment for that. Once again, I'm telling you, holistic treatment mat lekar chalna, psychologist ho, psychology se jude raho. Okay? Now, applications, how you can use the hypnotherapy. Breaking the unwanted habits, managing stress and anxiety, gaining relief from psychosomatic conditions, overcoming fears, phobias, compulsions, improving personal and professional relationships, no longer being victim to destructive, toxic emotions, and a lot more. So आपने देखा बड़े बेसिक चीजों के ऊपर काम किया जा रहा है हिप्नोथेरेपी में. ये एलिमेंट्स को ट्रीट नहीं कर रहा है, ये डिसऑर्डर्स को ट्रीट नहीं कर रहा है. अब इसमें कॉर्ड कटिंग भी होती है, ठीक है. अब इसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी होता है, ठीक है. और इसके अलग अलग चीजें भी होती है. deja vu. Anyone remember deja vu? What is deja vu? Yeah, we think that something is happening again. Something is repeated. हो चुका है मेरे साथ ये. So that is मेरे subconscious में वो चीज already है. Ma'am. Yes. Ma'am, in the previous slide, you have talked about inhibition. What does that mean in hypnotherapy? Like, how would we connect that? In the fourth one, overcoming fears, phobias, compulsions, and inhibitions. Which one? Inhibitions, the fourth line, overcoming fears, phobias, compulsions, and inhibitions. Acha, okay. Overcoming fears, phobias, compulsions, and inhibition. So inhibition is something that the person is unable to, feeling confused and unable to be into the relaxing position, right? The person is unable, like मुझे एक चीज से प्रॉब्लम हो रही है तो मैं हर चीज के ऊपर झल्लाहट निकाल रही हूँ अपनी. यूजुअली होता है ना, घर में यही पंगे होते हैं ना कि हमें परेशानी कुछ और होती है और हम निकालते कहीं और है. So that is inhibition, that I am inhibiting my natural state. I am stopping that. So by doing that, relaxation मिलेगा, वो निकल जाएगा. And this thing is widely used in hypnotherapy or something like that. What?
This inhibition. Inhibition, specifically inhibition. Yes. Okay. कुछ लोगों को जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, वो बड़े आसानी से हिप्नोथेरेपी से सेशन लेकर अपने आप को हील कर सकते हैं. Okay. All right. ठीक Thank है. you. Yeah. Also, can you explain what is psychosomatic conditions? Psychosomatic conditions in which the person is thinking. Psychosomatic disorders बता देती हूँ. Psychosomatic disorders are those disorders in which the person is thinking that मुझे बीमारी है, जबकि सारे medical reports are normal. And this comes from something that has happened. Either someone has died because of cancer or because of kidney. So the person has the negative impact of that particular incident, and that person is always getting the KFT done or the cancer markers done. Okay, no, I'm sick, I don't know, I'm having this. So the physical ailment is not there, the reports are normal, but yes, the person is thinking that I am sick, I am not okay. So that is psychosomatic conditions, where the person is saying, I'm feeling something, pain is there, but even after giving the painkillers, pain is not going out. Okay, thank you. Yeah. Myths about hypnotherapy. Makes you do silly things? Not at all. Only weak minds can be hypnotized? No. Defensive people are not open to hypnotherapy. जो cautious होते हैं. You are asleep in hypnotrance. आप सो जाते हो. ऐसा कुछ नहीं होता. Only swinging a watch can be hypnotized. No. People can stuck in hypnosis. अब क्या Inception movie चल रही है ये? How many of you have watched Inception? नहीं देखी? Seriously, no one has watched Inception. Is that a movie? I watched it. Yes, it is a movie. Yeah. Did not watch. Can you please write it down on the chat box so that we can watch? अच्छा एक बार बता, कौन सी मूवी देखते हो तुम लोग? नहीं मैम, मैं तो मूवी देखती नहीं हूँ ज्यादा. या मैं भी नहीं देखती हूँ, बट नॉलेज के लिए तो मैं देखती ही हूँ. Yeah, I have to watch. Please write it down, no ma'am. अगर समझ में आ गई ये मूवी आपको, अगर आपको ये मूवी समझ में आ गई, तो आपको आज की क्लास समझ में आ जाएगी. Watch it. Yes, ma'am. It's basically it's with humans mind. ना हर किसी के mind में घुसकर and the systems everything they fitted it down like that way. हाँ, so you have seen, right? हाँ. अच्छा, end क्या था महमूदा? Tell me. When I watched a movie first, मैंने सोचा नहीं था ऐसा इतना कुछ होगा, because it is far from the reality. When I first watched the episodes, okay, and after that I said, okay, fine, this is the thing, and I'm very curious after that watching the movie. Okay, ऐसा भी हो End क्या था? क्या वो वापस आ जाता है reality में? Of course, everything is in the mind only. Nah, you didn't get the movie then. वो अपने ड्रीम में ही स्टक हो जाता है. No, वापस नहीं आता. so they are stuck in their dream, but because of their everything they are in their mind only. They have set up the whole thing. So they are stuck in that dream. Their body is in the present, but they are living the life in that dream. Because of that the trauma what had happened. उसकी वाइफ जो है वो वहां पर चले जाती है, उसको बार बार बुलाती है, come live with me in this world. We will be together. So he thinks like that, na, that yes, I will be there, matlab, with her, that I will have to live with her, matlab. No, he never wanted to. So when his wife calls him, na, in the movie, in the middle of the part, when it showed that the wife is calling him, and she tells her repeatedly in the lift also, when it comes down up and down at that point of time. So again, the floors which are changing, it is the stage of their life, what's shown in that movie, right? बच्चा, they are just mind players. They tend to do the robbery, ठीक है?
लोगों के दिमागों से घुसकर उनके पासवर्ड्स निकालना, वो एक नेक्स्ट लेवल की मूवी थी। और वो जब आई थी तब ये सारी चीजें नहीं थी इतनी कॉमन। सो इंसेप्शन मूवी में क्या होता है कि उसकी जो वाइफ होती है वो सबकॉन्शियस में है उसके साथ। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस, कि वो अपने सबकॉन्शियस में अपनी वाइफ को फील कर रहा है, क्योंकि वाइफ इज रिसाइडिंग देयर। वाइफ मर चुकी है वैसे तो। अब जब वो जाता है तो वो भी अपने उसमें, वो कंप्लीटली अनकॉन्शियस स्टेट में होते हैं जब वो अपने माइंड का दूसरे माइंड में जाने की कोशिश करते हैं। तो वो एक अलग दुनिया दिखाई गई है। एंड में जब सब चीज हो जाती है और उसकी वाइफ उसको रुकने के लिए कहती है, तो वो उसको मना कर देता है, वो वापस आने के लिए करता है। Ma'am, please don't tell the movie now. वो वापस नहीं आता, वो अपने सबकॉन्शियस में ही स्टक हो जाता है। और 90% लोगों को मूवी समझ ही नहीं आई है। प्रॉब्लम तो ये है। और वो रियलिटी में उसी पोजीशन में है, कोमा वाली पोजीशन में। सो ये है, वॉच दिस मूवी, you'll get to know a lot about it. So, ma'am, there is a question like you said about coma. So, means being in coma means to be in full subconscious state? Yes. Okay, Conscious and subconscious both. Mostly की subconscious में होगा, because that person cannot move, no? Hypnotherapists have special powers. Utter shit. You cannot come out of hypnosis if you want. No, you can. Hypnotherapy is dangerous? Not at all. और नौ सीखिए, सिर्फ करवाना भी मत। पैसे भी चार्ज करेंगे और कुछ करके भी नहीं देंगे आप लोग को। Then comes the fact is, hypnotherapy is a very gentle and an effective way of letting go of the issues that affect someone on the subconscious level. बहुत माइनर से इश्यूज जो होते हैं वो बहुत आसानी से हम हिप्नोथेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं, सो यू कैन अचीव अ हैप्पियर, फ्रीयर, easier and more fulfilled life. The afflictions suffered by the body, the soul sees quite well with the eyes shut. पेन होता है ना, रातों की नींदें खराब हो जाती हैं, तो हिपोक्रेट mentioned it in a very beautiful manner that the afflictions suffered by the body, the soul sees quite well with the eyes shut. The depth of a soul is not measured by what appears on the surface. Instead, what that person, we often said that, be kind to everyone. We never know what kind of battle people are going through, right? So, हंसते हुए चेहरों पर मत जाओ, अपने साथ भी काइंड रहो, दूसरों के साथ भी काइंड रहो। यहाँ पर अब एक पॉइंट लेकर आती हूँ सेल्फ हिप्नोसिस का, जो कि अभी मुझे बताया था। सेल्फ हिप्नोसिस आप सब ने ही एक्सपीरियंस करा है अपनी लाइफ में। कभी कभी ऐसा हुआ है कि क्लास में बैठे बैठे बाहर खिड़की के बाहर देख रही हूँ, मैं खो गई। हम सब ने ये एक्सपीरियंस करा होगा, राइट? फिर टीचर से चौक मारती थी, बैक टू क्लास। ओके, सॉरी, दैट इज एक्चुअली सेल्फ हिप्नोसिस। कंप्लीटली रिलैक्सिंग पोजीशन में हूँ और अपने सबकॉन्शियस को एक्सप्लोर कर रही हूँ एंड आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड। जरूरी नहीं है बंद आंखों से ही आप हिप्नोसिस में जा सकते हो, आप खुली आंखों से भी हिप्नोसिस में जा सकते हो। कभी कभी आपको ऐसा फील होता है दैट यू आर ड्राइविंग, सडनली आपका जो ध्यान होता है, ड्राइव कार आप कर रहे हो, सब कुछ है, लेकिन माइंड कहाँ है ये पता नहीं होता। बॉडी एकदम लाइट फील होने लगती है। The people who knows driving, उन्होंने कभी इस चीज को फील करा है कि ड्राइव करते करते उनका ध्यान पता नहीं कहाँ चला जाता है, बॉडी एकदम लाइट हो जाती है, ड्राइव भी नहीं कर रहे हैं और दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया। So many a times it happens कि we are driving and we really don't know what we are thinking of, and still we are careful about what we are, where we are going, and we reach there. Self-hypnosis state. That is the self-hypnosis state. बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता था when I used to offer namaz, हमारे यहाँ तहज्जुद, that is the middle of the night, वहां पर उस टाइम पर I used to offer namaz रात के 2-2:30 बजे. At that particular moment I was so much connected with Allah that I feel that my whole body is like relaxed and very light, और
जब दुआ मांगते हैं, यूजुअली या तो हाथ उठा के दुआ मांगते हैं हम लोग, बट आई प्रेफर टू डू इट इन दी सजदा फॉर्म, मैं सिर झुकाकर दुआ मांगती हूँ. सो अक्सर मुझे ऐसा होता है कि in that position when I'm bowing down in front of Allah, so I feel that yes, I am connecting with my subconscious, and मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, मैं 1-1 घंटे तक भी उस पोजीशन में बैठ सकती हूँ. सो दैट इज ऑल्सो सेल्फ हिप्नोसिस. कभी कभी बैठे बैठे चाय का कप मेरे हाथ में है, चाय है मेरे हाथ में, थॉट आ रहा है, पता नहीं क्या हुआ, फिर एकदम वापस आ जा, ओके, दैट इज ऑल्सो सेल्फ हिप्नोसिस. हिप्नोसिस को अचीव आप सबने करा है अपनी लाइफ में, सबने करा है, पर असल में पता नहीं है कि हमने कब किस टाइम पर अचीव करा है. ठीक है, सो उस टाइम पर आपके जितने भी ट्रॉमास हैं, सब कुछ है, वो आपको दिख जाते हैं. आप जो चीजें आपको परेशान करती हैं, या खुश होते हो, खुशी में भी कर सकते हो सेल्फ हिप्नोसिस, दुख में भी कर सकते हो. लेकिन अगर हिप्नोथेरेपी को अप्लाई करना है तो सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई करो. ट्राई टू टेक योरसेल्फ इनटू द थीटा लेवल, सॉरी डेल्टा लेवल. कभी कभी ऐसा होता है, सोने जा रही हूँ, बस अब आंख बंद होगी और मैं सो जाऊंगी, और एकदम से झटका आ जाता है मुझे. सब खेल यहाँ से है, दिमाग से. सो जितना पीसफुल आप रहोगे उतना अच्छे से आप सब कुछ कर पाओगे. एंड ऑफ द स्टोरी ये है. हिप्नोथेरेपी में बाकी की टेक्निक्स होती हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट है, और हम ये जब इंसान अपने डेल्टा अल्फा बीटा डेल्टा लेवल पे पहुंच जाता है, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट वी टेंड टू आस्क दैट वेयर आर यू राइट नाउ. नाउ द पर्सन इज इन सबकॉन्शियस, तो वो डेफिनेटली उसी जगह पर जाएगा जो उसको परेशान कर रही है, राइट? या फिर सबसे पीसफुल जगह पर जाएगा. So person will say that I am in a beautiful garden and I'm seeing there is so much of greenery, and then we guide our session accordingly. Then we make the person relax. Sit on the chair if you found that you're seeing some sort of water. You feel like putting your legs into the water. How are you feeling now? I'm feeling relaxed. Do you want to keep your feet in the water, or you want to just explore the space, or anyone is there with you? Is anyone accompanying you in this? So basically ये है कि इंसान को सबकॉन्शियस में एक अच्छी मेमोरी डालना, और खूब ब्रीद इन ब्रीद आउट कराना, और 1-1.5 घंटे तक जब आप इसी चीज को लेकर घूमोगे, उसके फियर्स के ऊपर जब फिर धीरे धीरे बात करोगे, सेशन स्टार्ट कर दोगे, तो सब चीजें अपने आप नॉर्मल हो जाएंगी. फिर नॉर्मल रिलैक्स करा के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 open your eyes. How are you feeling now? I am better. That is the thing. ठीक है? That's how hypnotherapy works. कोई rocket science नहीं है. Any question is there, so please let me know. Ma'am, using hypnotherapy, also the therapist try to use the method of persuasion. Persuasion as in? I mean, you talked about if a person is having some kind of anxiety. So during his the session, does the therapist try to persuade him to overcome the anxiety? हम फोर्स नहीं करते, हमें जो कराना Okay. है कोई भी डायरेक्टली नहीं बोलते हैं. ये मेरा, Yeah, I mean indirectly. ना ये मेरा स्टाइल है अपनी बात को मनवाने का. और मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपको अपने थेरेपी सेशंस में अपना कुछ काम नहीं करवाना है क्लाइंट से, तो कभी भी उसको ये मत बोलना ना ये मत करो या ये कर लो, नहीं. ट्राई दी असर्टिव टेक्निक्स, गिव द स्पेस टू द क्लाइंट. आप खुलो, आपको क्या चाहिए वो करो. ठीक है? Okay, thank you. Yeah. Any other question, guys? I hope it's clear to everyone.
but it's a request to watch in Hello, session. ma'am. जी sir. Ma'am, books are available. Books, which books, sir? Hypnotherapy. Sir, yes, you can get the hypnotherapy books online. Okay. Can you suggest a good name, any good book on hypnotherapy? Just 1 minute. सर मैं यहाँ पर ना अपना कुछ वो नहीं कर सकती हूँ, यहाँ ये सवाल पूछ कर ना आप लोग मुझे बाउंड कर देते हो। है बहुत अच्छा, मैंने आपको बताया कि मैंने 8 पुरानी बुक्स जो हैं हिप्नोथेरेपी की, उनमें से मैंने Ma'am, this book I purchased from market. सर राजेश सर, एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट विद समीर सर, ठीक है? Okay, ma'am. क्या अगर जेन्युइनली पढ़ना चाहते हो हिप्नोथेरेपी के बारे में तो मैंने उसमें A to Z चीजें करी हुई हैं, बट आई एम नॉट अलाउड सर, मैं क्या करूं, मैं अपनी पब्लिसिटी यहाँ नहीं कर सकती हूँ। Will we be getting any study material? You will get the study material, same. Okay. You will get the study material. हाँ जी राजेश सर। Yeah, ma'am, I purchased 2 books from market. This one and this one. सर एक मिनट रुकिए जरा, मुझे देखने दीजिए। हिप्नोटिज्म, सम्मोहन विद्या, चमत्कारी, रोगोपचार व त्राटक साधना, ठीक है। दूसरी? Yes, ma'am, this from Amazon, ऊपर करिए, just 100 rupees. सर ऊपर Just 100 rupees. The Witch Guide to the Counseling Therapy. ठीक है सर, पढ़ सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वो चमत्कारी वर्ड ने हमको थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क पुट अप कर दिया सर। हिप्नोटिज्म पर है वो। हाँ, हिप्नोटिज्म एंड मैस मैरिज भी। ठीक है। Anyone else? Ma'am, some more case examples, please. Sanvi ma'am is asking. Case examples, ma'am, I have given about that a person. Cord cutting सुना है? Cord cutting भी नहीं सुना? Past life regression सुना है? I listen. Yes. क्या होता है? मैंने सुना हुआ है मैम। क्या होता है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जैसे जिंदगी में अपन पिछली लाइफ में कुछ गलतियां करना, या कुछ ऐसा लगता है कोई अपना फ्रेंड जैसे आगे निकल गया, साथ में पढ़ता है और वही काम हम भी कर रहे हैं लेकिन हमें सक्सेस नहीं मिली, वो आगे निकल गया, तो थोड़ा रिग्रेशन होता है कि अपने से गलती कहाँ पर हो गई। सर दैट इज नॉट पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो प्यार में भी धोखा हो जाता है तब भी रिग्रेशन होता है। सर रिग्रेट नहीं, I'm talking about regression. ओके ओके ओके। पुनर्जन्म। रिग्रेशन, ओके मैम। कॉर्ड कटिंग सुना है? Let me open my content, guys. Like, अब यहाँ पर I'm feeling bound. So this is my 92 pages of research.
अगर मैं आप लोग नहीं देखेंगे। No, ma'am, we can't see. Yes, we can now. थोड़ा थोड़ा सा तो दिख रहा होगा ना? Yes, ma'am. है ना? तो देखो Yes. ये स्टार्टिंग से है, ये 92 पेजेस है इसमें, ठीक? इट्स अ कंप्लीट बुक ऑफ माइंड बेसिकली। कैसे, कब, कहाँ, क्या अप्लाई करना है। Are you going to share, ma'am? Let's see. This is my research work, sir, and if someone wants to talk about this, then you can just plan a meeting with me, with your relationship counselor, and then I'll just let you know. Okay? Book a session with me about this, and then I'll let you know. Hypnotherapy का session है, तब मैं कर सकती हूँ। हाँ जी। मैम ये 92 पेज का जो आपने बताया कहाँ से अवेलेबल होगा? सर ये मेरी मेहनत है, मेरी रिसर्च है, ये मेरे पास अवेलेबल है। तो दे दीजिए मैडम सबको, मेहनत काम आएगी दूसरों के। घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या सर? घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? मुफ्त की सेवा का कोई वो नहीं होता। मैडम आजकल घोड़े घास के अलावा बहुत सारी चीजें खाते हैं। सही बात है सर। अब मैगी कॉमन आदमी भी खाने लगा, आज से 20 साल पहले पैसे वाले लोग खाते थे मैगी, चॉकलेट खाना गरीब। Just one question, ma'am. राजेश सर। जी मैम। हमें जो है ना मीठा बोलने वाले पसंद नहीं, और ना ही हमें मीठा पसंद है। थोड़ी कड़वाहट हमें अच्छी लगती है। Ma'am. Yes. Yeah. Can you say something about this cord cutting? Yeah. When you have raised this topic, yes, please say something about that. Now this breakup is there, ठीक है? So the person is not able to just feeling like कि मैं इससे overcome कैसे करूं? I am unable to overcome the breakup. So what is happening? We are providing the session, ठीक है, in which we are taking the person into the just a second. जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जी।
हाँ, सो कॉर्ड कटिंग में क्या होता है, हम इंसान को लेकर जाते हैं उस सिचुएशन में, दैट फेस द पर्सन, talk, speak out your heart to that person, the traumas that person has given to you. फिर उसके बाद you're sensing that you're connected to that person, cut that cord. हम कहते हैं take the scissor and cut that cord, connection. वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मैं ये याद दिलाना चाह रही हूँ खुद को कि मैं इस इंसान से अब कट हो चुकी हूँ. That's how I'm doing it. That is cord connection, cord cutting. ठीक है? Yes, Amir sir. Yes, ma'am. So my question is related to spirituality and raising the consciousness. So is it true that to reach to the level of spirituality or meditation, we raise the consciousness or we go into unconscious mind? We never go into the unconscious, sir. When we are meditating or connecting to the God, we never go unconscious. पता है क्या होता है? When we started getting that peace, that we started feeling the inner peace, तो हमारा माइंड जो है ना वो रिलैक्स होने लगता है. जब रिलैक्स होता है तो फिर हमें नींद आती है. ठीक है? So basically we are attaining the relaxation state, not the unconscious state. Okay. Okay. Any more question, guys? Done for today? I hope आप लोगों का संडे खराब नहीं करा मैंने. Can we just call it off, guys, now? अगर कोई Yes, question ma'am. Thank you so much. Yes, ma'am. Thank you. मैडम थैंक यू. Thank you so much. मैडम आप अच्छा कन्विंस करती है. थैंक यू मैम. मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ सर. कन्विंस भी नहीं करूंगी तो मैं नहीं करूंगी ये तो कौन करेगा? एक छोटी सी बात. नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हवाई जहाज सर के ऊपर से निकल जाता है ना. सामने से निकलना चाहिए. आपका हवाई जहाज क्या सामने से निकलता है, दिखता है. वो लोगों को समझाते हैं तो समझ में आता है. मतलब ये है. थैंक यू. रियली मीन्स अ लॉट. थैंक यू. ओके, थैंक यू. चलिए. So this is Sadaf Saeed now officially signing off the session. Guys, अगर कोई भी query है तो एक मैम एक छोटी सी चीज पूछनी थी कि जो हिप्नोथेरेपी अपन अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं, थोड़ा आप मेरे को डिटेल में बता दीजिए. जैसे कि डिफरेंट टाइप के जो क्लाइंट्स आते हैं ना, जो तो उसमें अपन कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं हिप्नोथेरेपी को. जो थेरेपीज भी बहुत प्रकार की होती है. जिनको डर होता है, फोबियाज होते हैं, इनसिक्योरिटी होती है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, बड़े बेसलाइन चीजें जो होती है, सेल्फ एस्टीम को लेकर इश्यूज होता है, फेलियर से डील नहीं कर पा रहे, ब्रेकअप से डील नहीं कर पा रहे, इन सब जगह पर आप अप्लाई कर सकते हैं. और एडिक्शन में मैम? एडिक्शन में भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर मास्टरी होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए एडिक्शन की. ओके मैम, थैंक यू. ठीक है. चलो गाइस, थैंक यू सो मच. कोई भी और क्वेरी हो तो आप लोग अपने रिलेशनशिप मैनेजर के साथ कहकर मेरे साथ एक सेशन बुक कर सकते हैं और वहां पर मैं आपके सारे क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर दूंगी. राइट नाउ दिस इज सदफ सईद ऑफिशियली साइनिंग ऑफ. टेक केयर गाइस, हैव अ गुड डे. बाय. ठीक है, बाय.